एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। आज हम सीखेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कोवर्जन। अभी तक हमने सीखा था इम्प्लिसिट टाइप कोवर्जन, जिसमें जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ही खुद से टाइप कन्वर्जन कर रहा था। बट एक्सप्लिसिट टाइप कोवर्जन में हम लोग खुद कोड लिखेंगे टू कन्वर्ट टाइप ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर टाइप। So let's start. तो तीन मेथड में बता रहा हूँ, वो हमेशा याद रखना। One is number method to convert anything into the number. Second is the string method to convert anything into the string. Third is boolean method to convert anything into the boolean. So ये तीन फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट में, which help us to convert type of a variable into another type. So पहले हम करते हैं conversion of string and boolean into the number. So basically we want to convert string को number में and boolean को number में। बहुत simple है। Let's say if I have a variable s variable and इसकी value है 1 2 3, I want to convert into the number. Okay, so just write number and give your variable into it. Okay, just सिर्फ number लिखना है। number method, as I told you, number method याद रखो। number method is an inbuilt method given by the JavaScript. इसके अंदर आपको सिर्फ variable का नाम देना है and it will convert it the string into the number. ओके, तो लेट्स सी। अभी 1 2 3 स्ट्रिंग में है, इट विल बी 1 2 3 इनटू द नंबर। डोंट बिलीव मी, जस्ट राइट टाइप ऑफ। ओके, टाइप ऑफ लिखने से हमें टाइप मिल जाएगा एंड इट विल बी नंबर। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, लेट्स से इफ यू कन्वर्ट अ बूलियन वैल्यू इनटू द नंबर। सो रिमेंबर गाइस, ट्रूथ ही वैल्यूज के लिए अगर नंबर कन्वर्ट करोगे, तो लेट्स से ट्रू के लिए नंबर कन्वर्ट करोगे, इट विल बी 1 एंड फॉल्स के लिए अगर नंबर कन्वर्ट करोगे, इट विल बी 0। सो अभी ट्रू है तो इट विल बी 1, if you say false it will be 0. okay, let's take some more example. number, so let's say number null. so अगर मैं null को number में convert करूंगा, so it will be 0 again because it's a falsy value. so this is also a falsy value, this is also a falsy value. so let's say if I have empty string, it will be 0. okay, if I have undefined, remember for the undefined there is no number defined for it. okay, but still it will be considered as nan. okay, for undefined it will be nan. so remember this. okay, what happens if I have a random string? In that case also, you can see this random string does not belong to a number. Okay, similarly for this case also it will be nan. So I hope that's clear guys, how to convert any string to number and boolean to number by using just number method. Okay, but there's one more thing. So let's say for example you have a variable k and it has a number 100 in a string. You want to convert this into a number. There's one more method to do it. Let's say for example console.log parse int. So parse int is the method which help us to convert any string number into the number variable. So you just have to give the variable here. Parse int is a method which help us to convert any number into the integer number. So you can see we got 100. okay, but what happens if I have a floating number along with it? okay, which means some points values. so will this also convert into the number? क्या ये point के बाद वाली values भी number में convert हो जाएंगी? let's see. no, parse int only give you the integer number. parse int आपको सिर्फ integer number ही देगा. okay, if you want those floating values, अगर तुमको floating values भी चाहिए, you just write float, parse float से आपको point numbers भी मिल जाएंगे. but better होगा कि instead of if you want कि आपको नहीं पता कि अगर आपको decimal values आने वाली हैं या point values आने वाली हैं, you just write number. okay, सिर्फ नंबर लिखोगे एंड इट विल हेल्प यू टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू दैट पर्टिकुलर वैल्यू. यू जस्ट राइट के. अब चाहे वो नंबर आ रहा हो या पॉइंट वैल्यूज, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू दैट वैल्यू. ओके, सो इफ यू वांट टू यूज जस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट पार्स इंट. if you want decimal values, you write parse float. if you just said कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, राइट नंबर. okay, so that's a number conversion of any value. let's talk about number to string and boolean to string. you can say console.log string method, inbuilt method that you can use. अब इसमें कोई भी अपना नंबर लिख दो, 1 2 3, it will convert into the string. okay, just write any boolean value, string में convert हो जाएगी. okay, whether it will be true or false, it will convert into the string. even though you write null or undefined, it will convert into the string. if you write null or undefined, it will convert into the string. okay, so everything almost convert into the string, but by just writing string in front of that particular value. okay, so string method you can use to convert anything into a string, but it's not enough. let's say for example if you have a variable x variable which holds a value of 1 2 4. let's say if you have a variable which holds a value of 1 2 3. अब इसको convert करना है string में. so how you will do it? you will say console.log x dot, do not forget dot. okay, dot x dot to string. so variable का नाम dot to string method you have to use. आपको to string method use करना होगा to convert any number into the string. So this is one more way to convert any number into the string.
Okay, so you can see 1 2 3 in a string again. So let's say if you have a variable which is y, which is true. Let's say y के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, you will say y dot toString. Yes, it will work. Okay, it will work. So toString method is something that you can use to convert anything into the string. So या तो string लिख लो या फिर toString लिख लो, it will convert into the string. Okay, I hope that's clear. Number to string and boolean to string. Let's convert string to boolean and number to boolean. ये भी सिंपल है बहुत ज्यादा. You just have to write console.log boolean method. अब कोई भी चीज को boolean में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमें दो वैल्यूज मिलने वाली हैं, या तो false या true. So if you write just 1 2 3, it's a truthy value. You get true for all the values. For all the falsy values, you will be getting false. Else, for all the truthy values, you will be getting true. So if you can see empty string, it will be false. For null, it will be false. For 0, it will be false because it's a falsy value. Okay. Even though you write 0.1, it is a truthy value. Okay. 0.1 is a truthy value. It's not 0, so it's a truthy value. Okay. If you write nan, it will be a falsy values. Okay. So I hope that's clear, guys. बहुत simple है. यहाँ पे अगर आप boolean लिखते हो किसी के भी सामने, वो convert हो जाएगा boolean value में. Either it will be true or false. If you write any string to convert into the boolean, let's say I want to write ABC, what will be the value? It's a truthy value, right? So again, it will be true. I hope that's clear. Now there's one more way to do it. So let's say if you have a variable z is equal to 1 2 3 and you want the boolean value of it, you just write not. Okay, 2 बार nots. आपको सिर्फ 2 बार not लिखना है and it will give you the boolean value of it. True. If you write let's say empty string लिखा तो इसकी boolean value क्या होगी? False. So z का आंसर हमेशा false आना चाहिए. You can see false. So not also is the way to get the boolean value of any variable. Okay, बस उस variable के आगे 2 बार not लिख दो. Basically it will reverse this. ये आपको reverse में दे देगी value, boolean value. And ये आपको reverse का भी reverse कर देगी, which means it basically converts the boolean value of it. So double not. And that's it about the explicit type coercion, guys. I hope आपको समझ में आया होगा. String, boolean, number, double not, parse int, parse float and toString method. अगर आपको अच्छा लगा हो तो please like the video and subscribe the channel so that you guys can continuously getting videos of JavaScript. Bye everyone.